this, and then this. You see here, make the arrow. And upward direction here. You see here y0 in the middle. अब ये middle में कैसे है? Suppose odd number of value are given, so surely one value is in the middle. But if even number of value are given, then two value are in the middle. So we can take any one as the middle value. Suppose 8 value are given, so then fourth number and fifth number value are in the center. So either we can take fourth value as x0 y0 or fifth value, depend upon our choice, and also we choose x0 y0 in such a way that more maximum जो है value of differences of various order will be used. या ऐसा नहीं आ जाए कि जो यहाँ आ रहा है वो अननोन आ गया, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, वो फार्मूले में है, तो ऐसा चूज करेंगे. तो here in this table, this is gas forward and this is gas backward. Actually, why I have made this table? With the help of this table, you can write the formula easily. In case of gas forward, the terms in the formula appear y0, del y0, this term, this, and del 2y minus 1, del 3y minus 1, del 4y minus 2, del 5y minus 2, del 6y minus 3, then del 7y minus 3, and del 8y minus 4. So these terms appear in the gas forward interpolation formula, and this term y0, del y minus 1, del 2y minus 1, del 3y minus 2, and so on in zigzag pattern, these appear on gas backward interpolation formula. Actually here what we are doing in case of forward interpolation formula, so we are transforming the forward value to the center, and in case of backward we are transforming the above value in the center, previous value in the center. So now only you need to, if you have constructed this table, then only you need to remember the coefficient of these, coefficient of del y0, del y minus 1, del 2y minus 1, and no need to remember it is del y minus 1 or del 2y minus 1, only you need to remember the coefficient. So with the help of this table, we obtain gas forward and backward both formula from Newton forward interpolation formula 1. So now substitute, you see in gas forward interpolation formula the terms are y0, del y0. So you see here these two terms are in the middle, and y0 and del y0. Next is del 2y minus 1, but here is del 2y0. So you need to transform del 2y0 in terms of these value, and the value lie on this zigzag line. So from this table we have, you see, del 2y0. Del 2y0 will be del 3y minus 1, del 3y minus 1 plus del 3y minus 1 equal to this minus this, so plus del 2y minus 1 plus del 2y minus 1. So if we replace del 2y0 by this,
del 2i0 by this, then both the value, you see, in place of this we transform the value in the middle are del 2i minus 1, this is in the middle, and this value is also del 3y minus also in the middle. So here we need to replace del 2i0 by this value, this, and next term is del 3y0. You see, del 3y0. So del 3y0 can be written as del 2y0. Del 3y0 can be written as del 3y minus 1 plus del 4y minus 1. So del 3y0, del 4y minus 1 plus del 3y minus 1, and again you see del 3y minus 1 is in the center, del 4y minus 1 is not in the center. So here you again we need to replace del 4y minus 1 by del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. तो ये फाइनली हो जाएगा del 3y0. Del 3y0 will be you see here del 3y minus 1, it is in center, and plus del 4y minus 1. So this will be del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. So del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, किसी को कुछ बोलना है? क्या प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा? आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर, मेरी से बाय मिस्टेक किसी का माइक ऑन हो गया होगा। ठीक है, ओके। So you see here, so B replaces del 2i0 by this, both the term are in the middle, del 3y0 by finally this term, and all three are in the middle. You see del 3y minus 1, del 4y minus 2, del 5y minus 2, all are in the middle. Del 4y minus 2, del 5, all are in the middle. Again, if suppose we require again to consider one more term in the formula, so then that will be here u minus 1, u minus 2, here u minus 1, u minus 2, u minus 3 upon factorial 4 del 4y0. So now in the similar way, here we can transform del 4y0 will be del 4y minus 1 and del 5y minus 1. तो ये del 4y minus 1 एक टाइम और आएगा अगले में, तो ये हो जाएगा दिस del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक टर्म और, del 4y0, दिस विल बी del 4y minus 1 plus del 5y minus 1. तो del 4y minus 1 plus del 5y minus 1. अब del 4y minus 1 अभी ट्रांसफॉर्म कर लिए थे, del 4y minus 1 will be del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. तो del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. y minus 2 plus del 5y minus 1. In the similar way, it will be del 5y minus 2 plus del 6y minus 2. So this del 5y minus 2 plus del 6y minus 2. अब इतने बहुत सारे हो गए, अप टू del 4 आप कंसीडर कर रहे हैं तो कितने वैल्यू हो जाएंगे?
in 9 value. If suppose 9 value are given, then only you require up to del 4y0. In the similar way we can जो है कि we can construct the table. यहाँ 9 वैल्यू लिए हैं तो del 4y0 तक फार्मूला आपको मिल जाएगा. अगर और वैल्यू लेना है तो इसके लिए आपको ये टेबल एक्सटेंड करना होगा. x5 y5 here x minus 5 y minus 5, then we will obtain the value. Now substituting these value in equation 1, substituting these value in 1, we have y equal to y0 plus u del y0 plus u minus 1 by factorial 2 del 2y0. So del 2y0 is del 3y minus 1 del 2y minus 1. So this del 2y minus 1 plus del 3y minus 1 plus u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 and then del 3y0. So del 3y0 by this. So del 3y minus 1 plus del 4y minus 2 plus del 5y minus 2 and plus u minus 1 u minus 2 and u minus 3 upon factorial 4 and del 4y0. So that will be del 4y minus 2 plus 2 times del 5y minus 2 plus del 6y minus 2 and so on. This. So now this can be written as y0 plus u del y0 plus u minus 1 by factorial 2. You see del 2y minus 1 is only one time. So del 2y minus 1 plus next term is del 3y minus 1. You see it is in this term and this term both. So it will be u minus 1 upon factorial 2. अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कितना u minus 2 upon 3 into del 3y minus 1. Next term plus del 4y minus 2 here one term and here again one term. So this plus this. यहाँ पर आपका कॉमन क्या होगा u minus 1 u minus 2 upon factorial 3. तो ये कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 plus u minus 3 upon 4. This and del 4y minus 2. अब अगला del 5 आएगा तो 2 del 5 here and 1 del 5 here. ये दोनों आएगा. इसके आगे वाले में भी del 5 आएगा वन टाइम. ठीक है. तो सपोज करिए इसके बाद हम नहीं लिखते हैं या लिखना चाहेंगे तो वो आएगा उस सिमेट्री से हम लिख लेंगे बाद में. तो दिस कैन बी रिटन एज y0 plus u del y0 plus u minus 1 upon factorial 2 del 2y minus 1 plus ये कितना आएगा u plus 1 upon factorial 3. तो u plus 1 u minus 1 upon factorial 3 and del 3y minus 1 plus नेक्स्ट टर्म में
here it will be u plus 1, u minus 1 upon factorial 4. So u plus 1, u minus 1, u minus 2 upon factorial 4 and del 4y minus 2. ये आ गया आपका फार्मूला दिस. अगर फिफ्थ ऑर्डर का लिखना चाहेंगे तो वो क्या आएगा, हम लिख देते हैं, कभी कोई जरूरत पड़ सकती है आगे. तो प्लस इन द सिमिलर वे वी ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म u plus 2 and u plus 1 into u minus 1, u minus 2 upon factorial 5 del 5y minus 2 and so on this. So this can be written as inside. This is known as Gauss interpolation formula. You see here del y0 del 2y minus 1 and then here del 3y minus 1 del 4y minus 2. So you see in table y0 del y0 del 2y minus 1 del 3y minus 1 del 4y minus 2 del 5y minus 2 and so on. So these are only you need to remember these coefficient. What are the coefficient? Because with the help of this table we can calculate जो है obtain कि what will come कि del y0 या del 2y minus 1 or del 3y minus 1 or del 2y minus 2 with the help of this table. So this is known as Gauss forward interpolation formula, and in short notation this can be written as, न्यूटन को भी आप शॉर्ट में हम नहीं लिखे थे, लिख सकते हैं. दिस कैन रिटन एज here y0 plus uc1 del y0 plus uc2 del 2y0 plus uc3 del 3y0 and so on. So in the same way here we can write this y equal to y0 plus uc1 del y0 plus uc2 del 2y minus 1 del 2y minus 1 you see here this uc2 और ये हो जाएगा u plus 1 c3 u plus 1 c3 प्लस ये -1 इसके लिए है प्लस uc3 del 3y minus 1 प्लस सॉरी ये u plus 1 c3 होगा u plus 1 c3 del 3y minus 1 plus u plus 1 c4 del 4y minus 2 plus u plus 2 c5 u plus 2 c5 del 5 y minus 2 and so on. Well, here it is easy to remember the coefficient, and this term which comes we can remember with the table, this table. क्योंकि जो भी एग्जाम होगा, सपोज करिए जब भी एग्जाम होता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे मेथड है. Actually, in all central interpolation formula, we require this table. By forming this table, we obtain the value of the various order
finite differences of y for the value of argument, and also which term appear under the formula, in particular formula. So this is Gauss forward interpolation formula. And next is backward interpolation formula. Again with the help of Newton forward interpolation formula, this is Gauss forward interpolation formula. चाहे आप ये याद करिए, दिस इज y0, या उसके पहले वाली, या ये इक्वेशन, दिस y. In the similar way, by transforming the value, here you see the value in the backward interpolation formula appear y0 del y minus 1, del 2y minus 1, del 3y minus 2, del 4y minus 2. So here we try to transform the value in the center from the upside. So here y0 is in the center, and del y0 is not on this line. So del y0 will be del y minus 1 plus del 2y minus 1. So finally we obtain Gauss backward interpolation formula. Y equal to y0 plus u. Del y0, you see table, del y0 will be del y minus 1 plus del 2y 0. Del y minus 1 plus del 2y 0, this. Del 2y 0. Now del y0 will be del y minus 1 plus del 2y minus 1. Del y minus 1 plus del 2y minus 1 ये होगा, this. Del 2y minus 1. Next plus u minus 1 by factorial 3. Del 3y0. You see here, del 3y0 will be this plus this term, and again this term will be sum of del 3y minus 2 plus del 4y minus 2. So del 3y minus 2, del 3y minus 2 plus del 4y del 3y minus del 4y, del 3y minus 2, del 4y minus 2, del 4y minus 2, this. Del 4y minus 2. And then this is the value of del 3y minus 1. This is del 3y 0, this plus this. इसकी वैल्यू हो गया this plus this. Now consider this, del 4y minus 1. So this is equal to del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. So del 4 plus del 4y minus 2 plus del 5y minus 2. This. And similarly, for other, we can write, and after simplification we obtain the formula that is known as Gauss
बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगला जो टर्म आएगा दैट विल बी u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 and here del 3 y0. So del 3 y0 you see is del 3 y minus 1 del 4 y0 होगा। तो del 4 y minus 1 and this will be and plus del 4 5 y minus 1. This will be del 4 y minus 2 plus del 5 y minus 2. So del 4 y minus 2 plus del 5 y minus 2. तो उसी को आप लिखेंगे या तो दो बार में लिख के अलग करिए। दिस विल बी del 3 y minus 1 प्लस del 4 y minus 2। वहाँ टेबल देख के आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस बिकम y0 प्लस u del y minus 1 प्लस u plus 1. You see here del 2y minus 1 del 2y minus 1। यहाँ कुछ मिस्टेक होगा। del 2y del y0 del 2y minus 1 एक्चुअल में ये फार्मूला था y0 प्लस u del y0 प्लस u minus 1 del y minus 1 प्लस u minus 1 u minus 2 del 2y minus 2 upon factorial 2 3 and so on। अब यहाँ पर क्या होगा del y0 is this del y minus 1 plus del 2y minus 1 and here this is del y minus 1 in the center। ये इसका नहीं बदलेगा बल्कि del 2y minus 2 ये बदलेगा। del 2 y minus 1 वहाँ टेबल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा एंड del 3 y minus 1 प्लस u minus 1 u minus 2 upon factorial 4। सॉरी ये 2 होगा ये 3 होगा नॉट 4। del 3 y minus 1 प्लस del 4 y minus 1। अब पुनः इनकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आएगा आपका जो है या जो पीछे लिखा गया था वही फार्मूला यहाँ भी यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं u del y minus 1 प्लस u plus 1 u upon factorial 2 del 2y minus 1 plus u plus 1 u minus 1 upon factorial 3
del 3y minus 2 प्लस अगला टर्म होगा u प्लस 1 u माइनस 1 u प्लस 2 upon factorial 4 and del 4y minus 2 and so on. तो दिस इज, अगर फिफ्थ वाला टर्म लिखना है कभी जरूरत पड़ेगा तो लिख देते हैं u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 and u minus 2 upon factorial 5 and into del 5 y minus 3. This. So this is known as Gauss backward interpolation formula. And in short notation, this can be written as, but here in both the case, Gauss forward and Gauss backward, value of u is same, but in Newton forward backward, value of u was different. Here u is x minus x0 upon h. So in short notation, we can write y equal to y0 plus uc1 del y minus 1 plus u plus 1 c2 del 2 y minus 1 plus u plus 1 c3 del 3y minus 2 and so on. या दो टर्म और लिख लीजिए, ये हो जाएगा u प्लस 2c4 एंड del 4y minus 2 प्लस u plus 1 c5 into del 5y minus 3 and so on. This is a short notation, nothing difference, same as above. So this is Gauss backward interpolation formula, and it formula also provide more accurate value when the value of u lies between same as in case of Newton forward and Newton backward, 0 to 1 and minus 1 to 0. Or next, by taking the average of these two formula, डायरेक्टली लिख देंगे स्टेलिंग फार्मूला, स्टेलिंग फार्मूला all are for interpolation. By taking the average of, suppose this is 2, 1 and 2, arithmetic mean of 1 and 2, this is 2, sorry 1, this is 1, तो taking, या कहीं 1 डाल दिए होंगे तो आप इसको 2 कर लीजिए, 2 and this is 3. So taking the arithmetic mean of these two formula, we obtain
अब देखिए y इज इक्वल टू y0 प्लस y0 डिवाइडेड बाय 2, तो y0 प्लस you see here this is first term is uc1 या डेल के टर्म में जो आप लिखना चाहें, u del y minus 1 and in forward u del y0, तो u is common, uc1 या u जो भी कहिए, this plus uc1, या बल्कि यहाँ uc1 ना लिखिए, दिक्कत आएगी, वो नहीं लिख पाएंगे। Then u is common and del y0 plus del y minus 1 by 2, this first term, and then second term, second is del 2y minus 1 and del 2y minus 1 here, the uc2 and u minus 1 by 2, और यहाँ del 2i minus 1 क्या है, u plus 1 by 2, तो कॉमन क्या होगा, u अपॉन 2, तो u अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, तो फाइनली जो आएगा क्या आएगा, दिस विल बी u स्क्वायर फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन by factorial 2 del 2y minus 1, here taking the mean of 2 and 3, arithmetic mean of 2 and 3, so we obtain this formula, and del 2i minus 1 plus u square minus 1 by factorial 3 and del 3y minus 1 plus del 3y minus 2 by 2 and so on, इसके बाद जो आएगा वो आएगा प्लस u स्क्वायर माइनस 1 by factorial 4, this is 4, del 4y minus 2 and so on. So this formula provides better approximation if minus 1 by 4 is less than u less than 1 by 4. Otherwise, this formula can be, we can apply this formula when mod of u is less than 1 by 2. Then it provides better approximation, but to obtain more better approximation, if value of u lies between minus 1 by 4 to 1 by 4, and then if we apply Stirling formula, then we obtain more accurate value of the interpolating function. This is the advantage. तो ये फार्मूला आप देखिए टेबल में आइए, हियर आल्सो यू नीड टू रिमेम्बर ओनली कोफिशिएंट, दिस टर्म, सी द टेबल, टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस, फर्स्ट y0 प्लस del y0 plus del y minus 1 by 2, second del 2y minus 1 plus del 3y minus 2 plus del 3y minus 1 divided by 2. आप देखिए यहाँ फार्मूले में वही आया है, वैल्यू इन द सेंटर तो 1 by 2 खत्म हो गया, एंड इन नॉट इन द सेंटर देन डिवाइडेड बाय 2, तो जस्ट टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ Gauss forward and Gauss backward, we obtain Stirling interpolation formula given by this provide better approximation when value of u lies between minus 1 by 4 to 1 by 4. अब नेक्स्ट दो फार्मूले बचे हैं, कल खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन भी कल करा देंगे, ठीक है।
हेलो, Yes, sir. ठीक है, नाउ यू कैन लीव। और अभी हम असाइनमेंट डाल देंगे, आप लोग उसको करके रिटर्न कर दीजिएगा। ओके सर। ओके। क्या समझे हो? कुछ भी करोगे